Okay, hello everyone. Very good evening to all of you. I once again welcome you all. Please let me know that now I am properly audible and visible to everyone. First of all, sorry for a delay in the session. Okay, so hardly we are 5 to 7 minute delay within the session. Sorry for that. There was a little bit tech issue. So we have finally fixed that and everything is okay now. So now please let me know that everything, that audio and video both are okay to everyone. So we can start this marathon session. Okay. तो चलिए एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दिए आप लोग दैट एवरीथिंग इज ओके, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके, सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन, वी कैन कंटिन्यू दिस सेशन. So we are going to discuss the major important points that are basically of the November and October part current affair. Okay, so November और December part को हम लोग basically cover up करेंगे within this particular session, and I'll try to cover more and more financial part. Okay, so financial part I'll try to cover more. Okay. So everyone please let me know that everything is okay, so we can start this session. Okay, तो चलिए फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट करते हैं आज का. और here let's discuss about the first news. पहली न्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना. और दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स, ओके, तो आप में से अगर आपने पहले ये सारी न्यूज़ जो है ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर यू ऑल्सो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. लेट्स स्टार्ट क्विकली. तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखते हैं. आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, एलआईसी कार्ड एंड मास्टर कार्ड ने कोलैबोरेशन के साथ एक को ब्रांडेड कार्ड जो है वो लॉन्च किया है. सो दे हैव लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड कार्ड. इस को ब्रांडेड कार्ड की अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूं तो इस को ब्रांडेड कार्ड में जो है कुछ स्पेशल फीचर्स जो है एलआईसी के जो होल्डर्स हैं, जो कार्ड होल्डर्स हैं, दे विल हैव दोस स्पेशल फीचर्स. उनको जो है स्पेशल फीचर्स जो है हमें देखने को मिलेगा. द स्पेशल बेनिफिट्स दे विल गेट. ओके, सो स्पेशल बेनिफिट्स हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं. तो ये यहाँ पर अगर मैं देखें हम, सो ऑलमोस्ट 27 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स ऑफ द एलआईसी विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वन इफ दे विल गेट दिस पर्टिकुलर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड. तो इसमें कौन कौन जो है कोलैबोरेशन में आया है? आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, मास्टर कार्ड एंड एलआईसी कार्ड्स, है ना. तो एलआईसी भी अपने कार्ड जो इशू करता है, एंड दैट एलआईसी कार्ड इज आल्सो गोइंग टू क्रिएट अ बेनिफिट फॉर देयर कस्टमर्स. अपार्ट फ्रॉम द रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह तो मिलते ही हैं. अपार्ट फ्रॉम द रिवॉर्ड पॉइंट्स, व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स दैट द कस्टमर्स कैन हैव? The first one is comprehensive coverage. The co-branded credit card provides the card liability coverage up to the 50,000 रुपीज़. सो 50,000 रुपीज़ का कार्ड लाइबिलिटी कवरेज यहाँ पर मिलने वाला है टू द कस्टमर्स. और अपार्ट फ्रॉम दैट द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी यहाँ पर कवरेज मिलेगा, एंड दैट विल बी अप टू 5 लाख रुपीज़. सो द फीचर ऑफ दिस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इज दैट अप टू 50,000 रुपीज़ यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा. को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की लाइबिलिटी को कवर करेगा 50,000 रुपये के साथ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 5 लाख रुपीज़ का एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी यहाँ पर मिलेगा दोज पीपल हु विल हैव दिस पर्टिकुलर को ब्रांडेड कार्ड. ये को ब्रांडेड कार्ड जिनके पास होगा उनको ये स्पेशल बेनिफिट्स भी देखने को मिलेगा. सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट दे विल हैव. ओके, सो दिस वन इज आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, एलआईसी एंड मास्टर कार्ड. ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक एक्सक्लूसिव जो है कार्ड. आगे बात करते हैं फ्रेंड्स. अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स विद इन इंडिया बैंक सर्ज टू 42,000 crore rupees, 42,270 crore rupees, making around a 28% rise comparatively to the 2023. So 2023 में 2023 में जो अगर हम बात करें जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी राइज हुए हैं, और 28% इसमें राइज जो है हमें देखने को मिलेगा. दैट द डिटेल हैज़ बीन प्रोवाइडेड थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो इन द लास्ट ईयर दैट अनक्लेम्ड डिपॉजिट फिगर वॉज 32,934 crore rupees. But now that number has increased by 28% to 42,270 crore rupees is a particular up to the March 2023 that unclaimed deposit that we are having. Now here the question arises, what is unclaimed deposit? तो unclaimed deposit क्या होता है? According to the definition that has been provided through the Reserve Bank of India, unclaimed deposits are those deposits which are not claimed within last 10 years. पिछले 10 साल से अगर किसी अकाउंट में जो है वो डॉर्मेंट हो रखा है, उसमें पैसे जो है पड़े हुए हैं और कोई यूज़ को क्लेम नहीं कर रहा है. सो लास्ट 10 ईयर से अगर कोई डिपॉजिट अनक्लेम्ड सेगमेंट में पड़ा हुआ है तो उसको हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट के स्टेटस के अंदर डालेंगे. If you can recall, we have also discussed about the depositor education awareness fund. So RBI said that कि on the financial year end के end पर सभी बैंक्स को उनके पास जो कंटीजेंट लायबिलिटी जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं, द बैंक्स विल हैव टू ट्रांसफर दैट अनक्लेम्ड डिपॉजिट टू डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में उस पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. एंड वो फंड जो है डिपॉजिटर्स के अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए कंडक्ट किए जाएंगे.
और रिसेंटली हमने एक और बात की थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है यहाँ पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए जो है पोर्टल भी लॉन्च किया था, उद्गम पोर्टल। एंड विद द हेल्प ऑफ द उद्गम पोर्टल दोज पीपल हु बेसिकली हु आर हैविंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स वो वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। एंड 31 बैंक्स हैज़ ज्वाइन हैंड्स फॉर दैट। ऑलमोस्ट 31 बैंकों ने उसके लिए जो है ज्वाइन किया है हाथ, और वहाँ पर आरबीआई जो है अनक्लेम डिपॉजिट जो है प्रोवाइड करा है। बैंक्स जो है अनक्लेम डिपॉजिट्स वहाँ पर देंगे। सो प्लीज लेट मी नो अप टू दिस पर्टिकुलर एक्सटेंट द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। ओके, लेट्स हियर डिस्कस. In a relevant during the ongoing winter session, the Indian Parliament disclosed a concern trending the unclaimed deposit in the country's banking system. So unclaimed deposit witnessed around substantial 28% hike. So this particular figure or number is very very important for us, that 28% hike we are having within this one. An annual rise reaching the staggering of 42,270 crore rupees. This number is also very important in the end of the last financial year, that is March 2023. This marks as a significant jump from the previous year figure that was 32,934 crore rupees. तो unclaimed deposit का परसेंटेज यहाँ पर हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अगर हम ब्रेक डाउन करें unclaimed deposit को, तो ये हमें जो है टोटल जो 42,000 करोड़ रुपीस जो unclaimed deposit है, इसमें कितना पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर unclaimed पड़ा हुआ है और कितना पैसा प्राइवेट बैंक्स के अंदर unclaimed पड़ा हुआ है, ये भी डेटा हमें यहाँ पर मिलता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट डेटा. Around 36,185 crore rupees are basically of public sector bank. तो मेजॉरिटी ऑफ जो इसमें अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें अराउंड 6,087 करोड़ रुपीस जो है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के यहाँ पर आपको डिपॉजिट्स जो अनक्लेम्ड हैं वो हमें देखने को मिलेंगे. So how much deposit of unclaimed deposit from this particular side, that is 42,270 crore rupees from ये जो टोटल अमाउंट है इसमें अराउंड 36,000 करोड़ रुपीस फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक साइड and the rest 6,087 crore rupees from private bank side. Okay, so ये total हमारे पास unclaimed deposit that we are having. डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई की डेफिनेशन है, अगर कोई पर्टिकुलर पैसा बैलेंस अकाउंट में इनएक्टिव पड़ा हुआ है फॉर 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए, 10 years, if there is an unclaimed deposit for 10 years or more than 10 years, in that particular case, this particular amount will be considered as an unclaimed deposit. और आरबीआई का ये कहना है कि आपका जैसे ही पैसा unclaimed deposit होता है, in that particular case, you will have to transfer that unclaimed deposit, your unclaimed deposit amount to deposit education awareness fund, डेफ फंड में आपको पैसा ट्रांसफर करना होगा. ठीक है. और आरबीआई ने अभी भी कहा है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में, दैट इज 31 मार्च 2024 में जो बैंक्स के पास जो कंटीजेंट लायबिलिटी अनक्लेम्ड लायबिलिटीज है, दैट दे विल हैव टू ट्रांसफर विद इन दिस डीएएफ फंड, डेफ फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, दैट इज डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई ने उद्गम पोर्टल तो लॉन्च कर ही रखा है, दैट इज उद्गम पोर्टल unclaimed deposit gateway to access information. This particular Udgam portal has been launched through the Reserve Bank of India so that people can basically claim for their unclaimed deposits. And right now almost 31 banks has joined this particular platform. लगभग 31 बैंकों ने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है. साथ ही साथ डिपॉजिटर्स जो unclaimed deposits हैं वो इन अ फास्ट मैनर लोगों तक प्रोवाइड किया जा सके, लोग उसको एक्सेस कर सके. तो इसके लिए आरबीआई ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, दैट 100 days 100 pays कैंपेन. नाउ व्हाट इज दिस 100 days 100 pays कैंपेन? इन प्रोएक्टिव मूव टू रिड्यूस द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो है, ये इसको रिड्यूस करने के लिए आरबीआई ने 100 days 100 pays का जो है एक तरीके से कैंपेन लॉन्च किया. और इसमें 90% अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो बैलेंस है, जो डिपॉजिटर एजुकेशन फंड में पड़े हुए हैं, पार्टिसिपेट करेंगे इस कैंपेन में. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सटेंशियल अराउंड 432 करोड़ रुपीस जो है वो ऑलरेडी जो है रिफंड किए जा चुके हैं इन अ राइटफुल क्लेमेंट्स जो जिन्होंने क्लेम किया, और उनको जो है इफेक्टिव एक इनिशिएटिव की तरह ये काम करा. So everyone, please let me know that these points are clear to everyone. This is very very important, and because this one is very very this one is since last 1 and 2 months or 3 months. ये लगातार continuously this one is the news. So we are definitely expecting question from this one. So unclaimed deposit continuously from last 10 years, if the deposit is unclaimed, nobody is using that particular deposit, so that will fall under the category of unclaimed deposit.
The next thing is that unclaimed deposit का पैसा where will have to transfer, where the banks will have to transfer the unclaimed deposit fund. They will have to transfer that in Depositor Education Awareness Fund, DEF fund में उनको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है. और comparatively to the last financial year, how much amount of percentage that has been increased in unclaimed deposit? So unclaimed deposit percentage has been increased by 28%. 28% का increment उसमें देखने को मिलेगा. And the majority of unclaimed deposits are of which kind of a bank? For public sector bank. Almost 36,000 crore rupees of a loan from public sector bank side, and the rest almost, if you observe, around 4 to 5 or 6,000 crore rupees from private bank side. Okay, so ये हमें देखने को मिलता है. So these are the number. यहाँ पर अगर देखिए 36,000 crore rupees ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक का, 6,000 ये, और टोटल जो है हमारा 42,000 crore rupees जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है. I hope these points are clear to us. Let's move on the next news. Okay, तो ये हमने देखा इसमें क्या है. Now let's talk about the recently Reserve Bank of India की monetary policy रिलीज की गई. So let's also talk about that. इसकी अगर हम बात ना करें तो दिसंबर में फाइनेंशियल न्यूज़ तो कवर हो ही नहीं सकती, बिकॉज दिस वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट RBI बेसिकली कंडक्ट. सो वी नो that RBI on every second month, bi-monthly RBI basically conduct bi-monthly review monetary policy. We basically try to check the situation that whatever the planning, whatever the kind of inflation target that we are having, whether we are achieving those target or not. So with the help of the monetary policy, we keep checking the inflation rate and we want to maintain the balance within the economy and economic stability. So friends, RBI till now is having the target of 4%. We are targeting 4% inflation rate plus minus 2% tolerance band. So we want to make the inflation rate between 2 to 6%. That is 4% inflation rate plus minus 2% tolerance band. Okay. So that we are targeting, and around somewhat around 4% inflation rate that we people are having. And that's why the Reserve Bank of India has observed within this particular monetary policy that there is no need to change any particular monetary policy rate. And that's why RBI hasn't changed any particular monetary policy rate, and we were basically continuing with the same rates that earlier we were having. And this one is continuously fifth time that RBI hasn't changed any particular rate. Okay, so there is no rate changes within the rates, and we are continuing with the same rates. Okay, please let me know that everything is okay. So here are the rates that we are having, and all the with the same rates that we are going. The policy repo rate 6.50%, SDF 6.25%. This one is marginal standing facility 6.75%, bank rate 6.75%, fixed reverse repo rate 3.5%, 3.35%, and the reserve rates are 4.50% and 18%. So we are continuing with the same rates. But apart from this one, RBI has also given an important commentary. RBI की important commentary भी रही और overall economic perspective. वो commentary क्या है उसके बारे में बात करते हैं. साथ ही साथ यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई को भी लेकर एक इम्पॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट किया, एंड यूपीआई को लेकर हमें एक फर्दर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इन फ्यूचर. सो देयर इज अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट वाज आल्सो वेरी मच हाईलाइटेड आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमिटी मीटिंग दैट यूपीआई लिमिट फॉर educational institutions fees payment, for educational institution fees payment, and for medical expenses, for hospital or medical expenses. If we are paying any particular hospital bill or any particular educational institution fee, so in that case the UPI limit is basically now available up to 5 lakh rupees. Earlier it used to be 1 lakh rupees, but now for this particular specific two categories, now the RBI has increased from 1 lakh rupees to 1 lakh rupees to 5 lakh rupees. We know in case of demat account, if we want to apply within the IPO, so also the limit is higher. But this one is two important category: education, if we want to pay education fees, or along with that hospital expenses or hospital bill payments. So for that limit is 5 lakh rupees, so that people can feel more and more convenient. इसके अलावा अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो हाईलाइटेड 10 मेजर पॉइंट्स विद इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, और ऐसे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आरबीआई ने क्या किया, हाईलाइट किया. नाउ व्हाट आर दोस डिफरेंट 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड दैट the year 2020 from 2020 to 2023 is a great year of volatility. In a history अगर हम बात करें, so that's a great year of volatility, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें volatility देखने को मिली. Lot of up and downs that we have seen. Right from the COVID के बाद हमने इकोनॉमी को बहुत नीचे जाते हुए देखा. आफ्टर दैट वी हैव इंजेक्टेड अ लॉट ऑफ मनी, इकोनॉमी को हमने बहुत ऊपर जाते देखा. सो देयर इज अ अप एंड डाउन काइंड ऑफ अ सिचुएशन. So that is the important point that RBI has highlighted. The next one,
Earlier, we were projecting economic growth that we were basically projecting around 6.5% GDP growth rate. But right now, RBI has changed that target, and right now we are projecting for this particular financial year 7% GDP growth rate. So 7% GDP growth rate that we are projecting for this particular financial year, and that is a very important thing for us. So 7% का टारगेट अब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं. Earlier it was 6.5%. So 0.5% or the 50 basis point higher GDP growth rate that we are projecting. So it's a good and optimistic approach that RBI is having. RBI की एक बढ़िया optimistic approach हमें देखने को मिले, and there is 7% growth rate that we are projecting. The next one. Apart from that, on the inflation front, the summer of 2022 is behind us, and we have made a significant progress in bringing down the inflation. The steady decline in the core inflation indicates that the monetary policy is working. If we talk about the core inflation, that means inflation related to those things which general people or general public are using, just like food inflation or inflation related to services. So on the CPI front, on the consumer price inflation front, we basically did well. Last year, the inflation rate was very high, around 8 to 9% that we were touching that. But right now, we have reduced from 5% or less than 5% inflation rate that we are having. So that's a good thing. And RBI is saying that yes, the RBI monetary policy has worked well. So जो हमारा target था, we are completing that target, and that's one of the biggest thing, one of the good thing that we are having. Okay, guys, everyone, please let me know that everything is okay. Please let me know everything is okay, and you people are getting all these points. आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं. We are all bankers. बताइए आप सभी लोग. Quickly, please let me know in the comment section. ओके तो ये पॉइंट अभी हमें क्लियर है. ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन. अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई ने और क्या कहा? मूविंग फॉरवर्ड, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट. इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर अस. वी कांट लीव द इन्फ्लेशन इन द ऑटो पायलट मोड. वी कांट लीव दैट. ये ऑटो पायलट है, जैसा चल रहा है सब ऊपर वाले भरोसे चल रहा है. दैट वी कांट डू. विल हैव टू एक्ट प्रोएक्टिवली. हमें प्रोएक्टिवली जो है एक्ट करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं हो कि पड़ोसी के घर में आग लग जाए या पानी सर से ऊपर चला जाए, देन आफ्टर दैट विल रिएक्ट. विल हैव टू रिएक्ट प्रोएक्टिवली. सो द फ्यूचर पाथ इज एक्सपेक्टेड टू बी क्लाउडेड by uncertain food prices, and that is very very important point that RBI has highlighted. We were according to the experts, we were not expecting good monsoon for the upcoming year. That means for year 2020-24, the expectation of the weather condition, that means expectation of the monsoon is not too good. That means definitely the food production will go down, and as the food production will go down, automatically the food prices will go upside, and food inflation will be there. So that's why RBI is saying that the next year will be very challenging for us. So that's why we can't wait and keep watching. We'll have to be act proactively, and that prediction that RBI is having, that the next year will be very challenging for us. The consumer price data for the November is expected to be very high. For the next year also we are expecting a higher rate of inflation, and that means the next year we can also expect some rate hikes, some monetary policy interest rate. Monetary policy में हमें कुछ rate hike देखने हुए मिल सकता है अगर food inflation बढ़ता है और the CPI rate will go upside food inflation की वजह से. ठीक है. So that next point that RBI has highlighted. The next one. The Monetary Policy Committee will be highly alert, and any sign of derailing of the ongoing disinflation process based on the evolving situation, the MPC will take appropriate action to reach to 4% target. अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है जो हमारा डिसइन्फ्लेशन का प्रोसेस है, if that will hamper, so will be proactively work for that. Now, what is, I'm in a very short manner, I'm explaining you what is these things. What are these things? Just give me a second. I'm explaining to you. Okay, here just look at. What is inflation? If continuous rise in the price of the commodities and services, that is simply known as inflation. There is a continuous rise in the price of the commodities and services, that is known as inflation. So here, let's suppose, friends, we are having normal price line, and here we are having the prices. That is inflation. Prices, or not exactly prices, we are having here inflation rate. Inflation.
देखिए, if there is a continuous rise in the price of commodities and services, there is continuous rise in the price of commodities and services. So this particular kind of a situation for economy is known as inflation. This particular situation within the economy is known as inflation. Now, if we want to reduce the percentage of the inflation, let's suppose, friends, the inflation percentage is at 20%, 30%, and we are reducing that inflation rate. Let's suppose the inflation is basically 30% within the economy. If we are reducing that from 30% to 20% or 15% or 12% or 5% or 1%, or even if we are reducing to at 0%. If within a positive context we are reducing the rate of the inflation, so this particular thing is known as disinflation. This particular process is what? Is disinflation. So friends, what is disinflation? Disinflation is that in a positive context we are reducing the rate of inflation. This is known as disinflation. I'm explaining this one so that we not get any we should not get fall into the any confusion. What is disinflation, deflation, reflation, stagflation? These are very confusing terms. So I'm explaining here just within next 2 or 3 minutes. This one is inflation. Continuous rise in the price of commodities and services leads to economy into inflation. If we are reducing the inflation rate in the positive context, so that process is known as disinflation. Let's suppose in the economy right now 6% inflation rate is going on and RBI has reduced from 6% to 4%. So what this process is? This process is basically disinflation. Now, if we are continuing reduction of the inflation rate and it has entered into the negative level, here what we are doing? Negative level of inflation. Now, what is negative level of inflation? The negative level of inflation is known as this is known as deflation. Deflation is what? If there is a continuous negative level of inflation within the economy. If this particular situation will continue for more than 2 or more than 2 quarters, so the economy will enter into the recession. So what is the clear-cut definition of the recession? If continuously 2 quarters, that means continuously up to the 6 months, the GDP growth rate of the country is in negative form. So that means we have entered within the deflation or recession mode. Now, if we gradually again increase the inflation rate, we want to bring that from minus, let's suppose minus 18, minus 15%, minus 15%, minus 18%, minus 10%, minus 2%, minus 1%, 0. If we want to bring back inflation within the economy, so this process is known as reflation. Reflation. So what different kind of a terms that we people are having? Inflation is positive context. Continuous rise in the price of commodity services in a positive context. 10%, 20%, 30%, 15%, 20%. Inflation is continuously rising. Inflation. If we are reducing the rate in the positive context, so that process is known as disinflation. Negative level of inflation is what? Is deflation. If we are again reducing from negative to positive, this process is known as reflation. And now, what is stagflation? Inflation with deflation is known as stagflation. So one more terminology than generally we observe. That terminology is, what is stagflation? Stagflation. What is stagflation? Stagflation is basically inflation plus deflation. In the case of the stagflation, we'll have 3 different kind of a scenario generally. Higher level of inflation, low level of economic growth, low level of economic growth, plus higher unemployment. If we are having these 3 kind of situations together within our economy, high level of inflation, that means what? That is inflation. Low level of economic growth and higher unemployment, that means the problem of deflation. Continuously, if these 2 problems will exist within the economy, so that is known as stagflation. Okay, so stagflation is what? Inflation with deflation.
I think this one is clear to us. Okay, so we can move again what we were discussing. So RBI said that कि जो derailing of the disinflation है, अगर हमारा जो disinflation का जो process है, disinflation का जो process है that we were basically doing, जो disinflation का process है, अगर ये हमारा derail होता है due to any particular reason, so we'll take appropriate action. तो हम appropriate action monetary policy will take. And along with that, we'll try to maintain we'll try to observe the liquidity of money within the economy. साथ ही साथ monetary policy के साथ we'll try to maintain actively जो है manage करेंगे liquidity of money with the help of the monetary policy. Everyone, please let me know that these points are clear to everyone. Don't bother about the PDF आप सभी लोगों को मिल जाएगी सेशन के बाद I'll add the PDF within the comment section और within the description box. तो description box के अंदर PDF का लिंक लग जाएगा और आपको PDF easily मिल जाएगी. If there is any particular language issue, so please let me know. I'm trying to go through the bilingual part, but थोड़ा सा in English part we are covering, so I don't think any particular issue. आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, सो प्लीज आस्क विद इन द कमेंट सेक्शन. आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए. आई होप ये पॉइंट्स क्लियर है. ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. मोर पॉइंट्स दैट आरबी सेड दैट the balance sheet of the financial institutions, financial sector is too strong within our economy. So right now our economical perspective, the financial institution strength is too good. Financial institutions अच्छा कर रहे हैं, and that is a good kind of a thing for us. The current account deficit is expected to be at the comfortable part. Why? Because the current account deficit is at the comfortable part. Gradually our exports are increasing, but along with that we are having good cushion of forex reserve, and $604 billion forex reserve is a kind of a good cushion for us. If any particular problem, global problem, or any particular global crisis, global economical crisis will happen, so we are immune from that. Why? Because our financial system are strong, and along with that we are having $604 billion reserve, and this particular $604 billion reserve will play a very crucial role for us. It provide extra cushions to us. ये इतना पैसा है कि हम 10-11 महीने तक अगर बैठ के केवल इंपोर्ट करते रहेंगे ना, still this particular money will not over, and this particular forex reserve plays very crucial role for any particular economy. At the time of 1991, we were having forex reserve just for 15 days import. At that time we were in big trouble, and after that we have launched the LPG model, liberalization, privatization, globalization, a new kind of economic policy that has changed our economy completely. That was one of the best decision, one of the best economical reform that we ever have seen within our entire Indian economy scenario. So 1991 का reform that was very big. अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था रघुराम राजन जी का, अभी आई थिंक वो द ललन टॉप पर आए थे अभी या कुछ टाइम पहले वो आए थे, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था. सो ही वाज सेइंग दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और ये वो सभी लोग, ऐसा नहीं कि रघुराम राजन जी ही कह रहे थे, सभी लोग कहते हैं कि हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म का पॉइंट था, दैट वाज ईयर 1991. Liberalization, easy business norms, privatization, just try to give more and more involvement of the private sectors within different sectors, different industries, and as well as globalization, bring foreign players within the country so that they can come with the new technology, new things. Okay, next one, stability of rupee पर भी हमें काम करना है, and because our macroeconomic fundamentals are good, so we are also strong at this particular part. चलिए आगे बढ़ते हैं next one, so that we can cover more and more thing. तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड जो है हमारा एकोमोडेटिव स्टैंड को आरबीआई ने फिलहाल विड्रॉ कर लिया है. अब हम धीरे धीरे आने वाले समय में वेट एंड वॉच कंडीशन में है, और जिस तरीके के इंडिकेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं आने वाले टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी में रेट में हाइक हो सकता. हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी होती है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की तरह, जब आरबीआई क्या करता है, रेट्स को बढ़ाता है. डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, ये इजी मॉनेटरी पॉलिसी की तरह थोड़ा सा काम करता है और इसमें रेट्स को कम किया जाता है. एकोमोडेटिव स्टैंस में कंटिन्यूअसली कई बार रेट्स को रिड्यूस करता है आरबीआई, सक्सेसिवली कई बार रिड्यूस करेगा रेट्स को इन ऑर्डर टू इंजेक्ट लिक्विडिटी ऑफ मनी. न्यूट्रल में नो चेंज, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, नो चेंज है ना. और ये जनरली जब सब कुछ होके कंट्रोल में चल रहा होता तो ये, तो हम फिलहाल हम न्यूट्रल में नहीं, हम एकोमोडेटिव स्टैंस को विड्रॉ कर रहे हैं. ओके, चलिए आगे बात करते हैं इंडिया विजन 2047. इंडिया विजन 2047 की अगर बात करें तो हम विकसित भारत की बात करें. 2047 का हमने सपना देख रखा अपने विकसित भारत का, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ का टारगेट हमें देखने को मिलेगा, और ये आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ जीडीपी. तो $609
ट्रिलियन रुपीज़, 1759 ट्रिलियन रुपीज़, 3604 ट्रिलियन रुपीज़ का हमारा टारगेट है। दीज आर द टारगेट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा गया हमसे एग्जाम में, चलिए एक बार आंसर देने की कोशिश करिए। देखता हूँ आप में से कितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सेशन को और अच्छे से, और फटाफट एक बार आंसर बता दिए कमेंट सेक्शन में। आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम यू ऑल गाइस। सो आप बैंकर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। आप लोगों का हेक्टिक डे के बाद यू पीपल आर इन द सेशन एंड दैट्स टू गुड। चलिए बताइए सभी लोग, आप लोग क्या होगा करेक्ट आंसर। द इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन विच काइंड ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विजन प्लान एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू अ डेवलपिंग नेशन, एंड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इज कंटिन्यूअसली रिपीटिंग दीज थिंग्स। ओके, मोदी साहब जो है विकसित भारत, संकल्प भारत यात्रा, विकसित भारत, लगातार इसकी बातें कर रहे हैं, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विजन इंडिया 2047 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ PIDF स्कीम, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप स्कीम इज बेसिकली कंटिन्यूइंग फ्रॉम 2020-21। इसमें हमने PM स्वानिधि स्कीम के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर हमने ऐड कर रखा है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मर्चेंट के साइड पर, जो मर्चेंट है उसके साइड पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का यूज़ किया जाता है। RBI ने इस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PM विश्वकर्मा स्कीम के बंदों को भी ऐड कर दिया है। सो दोज पीपल हु बेसिकली फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ PM विश्वकर्मा स्कीम, जो हमारे जो है ट्रेडिशनल जो हमारे वर्कर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। एंड नाउ दे विल बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फंड। And apart from that, the PIDF scheme, Payment Infrastructure Development Scheme, has also been extended for next 2 years. तो 31 दिसंबर 2025 तक ये स्कीम अब चलेगी और इस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नेक्स्ट 2 years के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें ज़्यादा फोकस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रीजन हो गए। इसके अलावा जो लद्दाख एंड दिल्ली का जो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर का जो रीजन है उस पर हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ Tier 3 से Tier 6 सिटीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इसके अलावा RDG अकाउंट, with the help of the retail direct gilt account, what we can do, with the help of the retail direct gilt account, we can invest within the government securities, government bonds, sovereign gold bonds, है ना, state government bonds में हम पैसे लगा सकते हैं। अभी तक ये इतना था, but now RBI basically want more and more participation, and that's why RBI has also introduced a different kind of instrument in which we can also invest with the help of the RDG account. So what is that different kind of instrument? हमारे पास जो different kind of instrument है वो है floating rate saving bond. So floating rate saving bond 2020 जो taxable bond है, now the retail investors can also participate with the help of RDG account within this particular bond. इस बॉन्ड की स्पेशलिटी ये है कि इसमें 7 year का लॉक इन पीरियड हमें देखने को मिलेगा, 7 साल का इसका लॉक इन पीरियड होता है और प्री मेच्योरिटी विड्रॉल यहाँ पर नहीं है। बट इफ देयर अ पर्टिकुलर पर्सन इज अ सीनियर पर्सन, 60 से 70 ईयर की एज है तो उसके लिए 5 ईयर का उसके लिए 6 ईयर का लॉक इन पीरियड होगा, और अगर एज है 70 से 80 साल की तो उसके लिए जो लॉक इन पीरियड होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, वो लॉक इन पीरियड उसके लिए 5 साल का होगा। ठीक है, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड ये इंडेक्स के साथ जो है लिंक्ड बॉन्ड होते हैं, जिसमें जो है इन्फ्लेशन के बेसिस के इन्फ्लेशन के साथ हमें वहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हर फ़ोन से करो पे, है ना। सो मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा हूँ क्विकली सो दैट वी कैन कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब हर फ़ोन से करो पे यूपीआई में बहुत कुछ अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। यूपीआई 123 पे नाम की फैसिलिटी लॉन्च हुई है। मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ, यू गाइज विल गेट दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, तो आप सभी लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, सो यू कैन क्विकली रिवाइज ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, जहाँ पर मोर एंड मोर एक्सप्लेनेशन पार्ट की रिक्वायरमेंट है दैट आई विल एक्सप्लेन। ओके, अदरवाइज हम एक बार कवर करते चलते हैं। So UPI 123 Pay में apart from a smartphone, now with the help of the basic phones we can also do a different kind of a payment, जिसमें हमारे पास प्री डिफाइंड IVR नंबर्स के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। मिस्ड कॉल पे से हम पेमेंट कर पाएंगे, मिस्ड कॉल से। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो एक एप्लीकेशन डाल देगा ऐप के अंदर, उससे पेमेंट कर पाएंगे, और साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी साउंड डिवाइसेस के थ्रू हम पेमेंट कर पाएंगे। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं। IVR में इंटरेक्टिव वॉइस जो रिस्पॉन्स होता है, जब आप कभी 123 या कोई नंबर डायल करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्री रिकॉर्डेड आपको वॉइस सुनाई देती है, उसको हम इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं। हमारे पास कुछ नंबर जो है NPCI की तरफ से रिलीज़ कर दिए गए, इन नंबर्स पर हम कॉल करके अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। नए यूज़र्स हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑलरेडी अगर यूज़र हैं तो हम ये सारी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र है, बैलेंस चेक है, मोबाइल रिचार्ज है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का सिस्टम का डेटा सेटिंग्स वगैरह, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू नाउ वी कैन डू द पेमेंट।
इसके अलावा मिस कॉल पेमेंट फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो विद अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर वी कैन गिव द मिस कॉल एंड आफ्टर दैट वी कैन इनिशिएट द पेमेंट प्रोसेस। इसमें अगर नए यूज़र हैं तो रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले, अगर पुराने यूज़र्स हैं सो वी कैन गो थ्रू द प्रोसेस एंड वी कैन बेसिकली डू द पेमेंट। ओके, तो मिस कॉल पेमेंट भी है और आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, ऑल द थिंग्स आर बेसिकली प्रेजेंट हियर इन डिटेल। इसके अलावा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो मोबाइल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, मोबाइल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फ़ोन में, आपके बेसिक फ़ोन में इस तरीके का सी लैंग्वेज पर बेस्ड आपको इस तरीके का एप्लीकेशन ऐड कर देंगे। इस एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड बैंक के साथ, जो फ्रेंड्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ओनली द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद द बैंक विल फंक्शन हियर, वो आप डालेंगे, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद OTP से वेरीफाई करेंगे, UPI ID क्रिएट करेंगे, UPI पिन सेटअप करेंगे और अब आप रेडी हैं इसके थ्रू ट्रांजैक्शंस करने के लिए। इसके अलावा वॉइस बेस्ड जो डिवाइसेस हैं, पॉड डिवाइसेस हैं, है ना, अपने बेसिक फ़ोन से इनके साथ भी कनेक्ट होकर हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमें डेवलपमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आने वाले टाइम में जो टोल इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशंस हमें देखने को मिलने वाला है। टोल प्लाजास पर जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है RBI का, उसके QR कोड को हम यूज़ करके वहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। वो सारे पेमेंट प्रोसेस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन अवर रेगुलर बैचेस, जो हमारे रेगुलर पेड बैचेस चलते हैं, इफ़ यू आर न्यू इन द सेशन तो मैं आपको बता दूँ, हमारे जो रेगुलर पेड बैचेस चलते हैं इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स हम इन डिटेल सेशंस के अंदर पढ़े हुए हैं। डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है, करंट अफेयर्स है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना। यहाँ पर हम लोग एक बार जो है गो थ्रू करें सो दैट हम करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें। ठीक है, अगर आप में से कोई पेड बैचेस का हिस्सा भी बनना चाहते हैं तो आप बाद में बन सकते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू क्या होगा फ्रेंड्स, अभी हम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में बायोमेट्रिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। वी यूज़ बायोमेट्रिक डिवाइसेस। द बिजनेस करस्पॉन्डेंट विल गो विद इन द अनटैप्ड और बैंकिंग एरियाज, अनटैप्ड और अनबैंक्ड एरियाज में वो जाता है। और आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज से कैश विड्रॉल्स, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र, ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन वो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। सो नाउ NPCI इज टाइंग अप विद द UIDAI के साथ वो टाई अप कर रहा है एंड द फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम नाउ विल बी इंट्रोड्यूस विद इन दिस वन। सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू वी कैन यूज दिस वन एंड वी कैन गो फॉर द पेमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट वन, प्रेजेंटेशन ऑफ अनक्लेम्ड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू डेफ अकाउंट। अभी आपको मैंने सेशन के स्टार्टिंग में डेफ अकाउंट के बारे में बताया, डिपॉजिटर एजुकेशन एश्योरेंस फंड। ये डिपॉजिटर एजुकेशन एश्योरेंस फंड में पैसा कहाँ से आता है, जो अनक्लेम्ड लायबिलिटीज़ होती हैं। अनक्लेम्ड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, बेसिकली ऐसे पैसे जिनको 10 साल से जिनको कोई यूज़ में नहीं लिया गया, जिनका कोई क्लेम नहीं हुआ है, वो अनयूज्ड हैं, तो वो अनक्लेम्ड लायबिलिटीज़ हैं। ऐसे अनक्लेम लायबिलिटीज़ को हर साल फाइनेंशियल ईयर के एंड में बैंक को कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ता है, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में। तो RBI ने कहा है बैंक्स के पास जो कंटिजेंसी फंड अवेलेबल है, अनक्लेम डिपॉजिट्स अवेलेबल है, उसको 31 मार्च 2024 का जब वो अपना बैलेंस स्टेटमेंट बनाएंगे तो उन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करके वो पैसा चुपचाप डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में डाल देंगे। इसी डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है उसी को हम जो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है उससे हम पैसा दे रहे हैं। तो अभी तक अराउंड 1400 करोड़ रुपीस वहाँ पर हमने लोगों को दे लिया है, मतलब लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया है जो डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड से। कैन वी कनेक्ट दीज थिंग्स टुगेदर? मनोज सर, शशि सर, बताइए आप सभी लोग, प्लीज लेट मी नो। सोनी मैम एंड भावना मैम, प्लीज लेट मी नो दैट all these points are clear to everyone. I know I'm going a little bit fast because I'll have to cover a lot of things here, but still I'm expecting that you people are getting all these points. चलिए एक बार बताइए सभी लोग समझ में आ रहा है ना अच्छे से? I know a little bit fast. आप लोग तो बहुत फास्ट काम करते हैं फिर बैंक के अंदर, है ना? You people are doing the best thing. Building the nation from the front. You know, you guys are basically within the backbone because the financial system or the economical system is basically a backbone for the economy. और economy जो है किसी country के लिए backbone की तरह काम करती है और economy में you people are basically playing the major role. And आप लोगों ने तो COVID जैसे tough time में you people were basically leading from the front. You know, you were also a kind of a COVID warriors. ना हेल्थ वर्कर्स तो हेल्थ फ्रंट पर लड़ ही रहे थे, बट इकोनॉमी फ्रंट पर आप पूरी तरीके से स्ट्रांगली खड़े थे, है ना? जो जहाँ पर लोग घर से नहीं निकलना चाह रहे थे, यू पीपल वर बेसिकली सर्विंग द नेशन। आप लोग बैंक में जाके काम कर रहे थे, तो दैट वाज अ वेरी क्रूशियल टाइम। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन।
चलिए आगे हम बात करते हैं। देयर इज अ सर्वे, इंडियाज जीडीपी, इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी जीडीपी है, वो आने वाले टाइम में हम लोग जो है एशिया की सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी बन जाएंगे, है ना आने वाले टाइम में। दैट इज वी आर प्रोजेक्टिंग फॉर 2030 अप टू द ईयर 2020-30 हम लोग जो है एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अभी फिलहाल जो है फर्स्ट नंबर पर चाइना है और सेकंड नंबर पर आपको जापान देखने को मिलेगा और थर्ड नंबर पर वी आर। सो हम ये टारगेट को हिट कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ up to year 2020-30 how much amount of GDP, how much amount of basically GDP that we are predicting? तो 2022 में अगर हम देखें तो लगभग हम 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। 1 ट्रिलियन मीन्स 1 लाख करोड़ रुपीज, एंड वी वर प्रोजेक्टिंग दैट अप टू द ईयर 2030 our GDP size will become 7.3 trillion US dollar. Our GDP size will become 7.3 trillion US dollar. सो हम 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का तक का सफ़र हम तय करना चाहते हैं अप टू द ईयर व्हाट, अप टू द ईयर 2020-30। और एशिया स्पेसिफिक रीजन में हम जो है वर्ल्ड की एशिया स्पेसिफिक रीजन में हम दूसरी टॉप इकॉनमी बन जाएंगे आफ्टर चाइना। सो दैट द टारगेट वी आर हैविंग। सो व्हाट क्वेश्चन दैट वी कैन हैव, that India's domestic GDP, gross domestic product, is reaching and hoping to 7.3 trillion US dollar up to the what particular time span by 2030, and at this particular time will be at the one of the best part. Okay, so हम एक बेस्ट पार्ट पर रहेंगे, ठीक है। तो वो हमारा एक ठीक ठाक इकोनॉमिक ग्रोथ दिखने को मिलेगा। Okay, now let's move on the next one. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है, आरबीआई को एक तरीके से कह दूं, रफ लैंग्वेज में कहूं, सो दे हैव वार्न्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दे आर बेसिकली सजेस्टिंग और रिक्वेस्टिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर अवेलेबल that directly provide credit to the customers. Let's suppose if I want to get loan, so if you search on the iStore, Apple Store, or on Google Play Store, you will get lot of applications. Okay, Money View, Ye View, Wo View. I'm not taking particular specifically name. A lot of applications are there. They can directly provide you loan, and they don't do lot of verification and investigation of the customer. And there is a lot of online frauds are going on right now. A lot of online frauds are going on. They will say that कि सर आपको पैसे की नीड है. If you search that एक बार I need money or I need loan, so a lot of these kind of applications will approach you. And on the daily basis, lot of people are in the trap. So the government is requesting to the Reserve Bank of India कि जिस तरीके से जब एक बैंक लोन प्रोवाइड करता है, the way that when bank provide basically loan to the customer, so they will have to go through the tedious process of basically a lengthy process of verification and all those processes, through which a customer can verify whether this particular institution or the bank is authentic or not. In the similar way, you'll have to be introduced a kind of a process through which the particular individual borrower can basically investigate whether this particular digital application is okay or authentic or not. So what thing we want to basically bring within this particular system. So illegal instant loan application have become a significant fraud or problem within India. These apps offer quick money but compromise the privacy and security. To address this issue, Ministry of Electronics and Information Technology has suggested RBI to create a detailed KYC process. And what is the name of this particular detailed KYC process? The name is KYDFA, that is Know Your Digital Finance Application. Now, with the help of Know Your Digital Finance Application, the companies will have to follow the similar KYC process for the bank account. Companies similar to the KYC process for the bank account. तो जैसे बैंक्स के लिए वहाँ पर प्रोसेसेस हमें देखने को मिलते हैं, they will have to go to the similar process. So a direct question that we can expect. Recently, the government of India has suggested Reserve Bank of India which kind of a KYC process or KYC thing that RBI should basically introduce for instant digital payment loan applications. और ये लोग बहुत लोगों को फंसाते हैं। जैसे मेरे को 20,000 की ज़रूरत है तो मेरे को 20,000 दे देंगे, लेकिन मेरे बिहाफ पर पता चला वो कहीं और लोन इशू कराकर वो मेरे नाम से कहीं और लोन चल रहा,
Okay, you people are in the bank, so please let me know this kind of frauds are there or not. Let's suppose you are having my Aadhaar card number, so whether on my name you can issue the loan or not. Okay, just for example purpose I'm asking, nothing else. Okay, because from a lot of different sources I'm basically came to know that yes, the bankers, the banks, those people who are basically within the bank, if they want, they can also take loan on the behalf of particular customer if they are having the access of Aadhaar card and PAN card, that is KYC details. So because lot of people are basically complaining within the banks, yes, मैंने कोई लोन नहीं लिया बट मेरे नाम से लोन चल रहा है एंड आई एम हैविंग द व्हेन आई गो थ्रू द पैन कार्ड एंड ऑल द डिटेल्स आर ये लोन अपने चल रहे हैं. इज दिस ट्रू और नॉट? दिस काइंड ऑफ फ्रॉड्स आर आल्सो गोइंग ऑन. आई एम राइट और रॉन्ग? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके सामने भी ऐसे केसेस आते होंगे आई थिंक कि सर मैंने तो लोन नहीं लिया है या मैडम मैंने लोन नहीं लिया है बट ऑन माई लोन ऑन माई फ्रॉम बैंक अकाउंट देयर इज अ पर्टिकुलर EMI दैट बैंक्स आर डिमांडिंग. ऐसा है कि नहीं? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा अभी. ओके नेक्स्ट वन, नहीं तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बल्क डिपॉजिट फॉर द रीजनल रूरल बैंक्स. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ बल्क डिपॉजिट with respect to the RRBs. Friends, for the scheduled commercial banks excluding RRBs, what is the definition of bulk deposit? If a scheduled commercial bank accept RRBs, they are accepting deposit 2 crore rupees or above that. That will be known as bulk deposit. For RRBs up to this particular extent, what the definition that we used to have, that definition we generally use, the deposit up to 15 lakh rupees will be considered as a bulk deposit for the regional rural banks, and for the other banks it is 2 crore rupees or above. So now RBI has changed this particular definition, and now 1 crore rupees and above will be a bulk deposit definition for the RRBs. Okay. So bulk deposit means a single rupee term deposit or single rupee 2 crore rupees or more than above for scheduled commercial bank excluding RRBs. For RRBs earlier we used to have 15 lakh rupees definition, but now this definition has changed, and now accordingly to the bulk deposit for RRBs would now mean single rupee term deposit of rupee 1 crore and above. सो RRBs के लिए फ्रेंड्स क्या हो गया है, 1 करोड़ रुपए से अगर अबव का डिपॉजिट है, द डिपॉजिट 1 करोड़ रुपीस एंड मोर देन दैट will be considered as a bulk deposit now for RRBs. Earlier that definition was what? Earlier that definition was we used to have 15 lakh rupees. So from 15 lakh rupees it is increased now 1 crore rupees. So if RRBs, regional rural banks are accepting, they are accepting deposit 1 crore rupees and above that, so that will be considered as a bulk deposit. And for other banks, 2 crore rupees and above. Okay, let's move on the next one. Now the bullet loan payment scheme. Bullet loan repayment scheme, that means generally we used to pay a loan amount with the help of the EMI. That means interest plus installment, interest part plus principal part we used to pay to the banks in form of EMI. What is bullet payment? Bullet payment means one shot payments of the principal. Will on the monthly basis or on the frequent basis will pay a little bit interest, but the rest principal amount will pay within one shot. That is known as bullet payment. For urban cooperative bank, especially for gold loans, earlier the limit for the bullet prepayment kind of a loan was 2 lakh rupees, and RBI has increased that limit from 2 lakh rupees to 4 lakh rupees. So now the bullet payment, the RBI has decided to increase the limit from 2 lakh rupees to 4 lakh rupees for bullet repayment. But this one is for which kind of urban cooperative banks? Those urban cooperative banks who clearly fulfill their priority sector lending target. So if you are an urban cooperative bank in the condition, you have completed all your priority sector targets or sub targets, so in that case you will be eligible for this kind of a
new limits. Okay, so that is there. So as per RBI guidelines, the urban cooperative banks were permitted to extend their loans from 2 lakh rupees with the bullet repayment option subject to a certain condition. So that has been increased to from 2 lakh rupees to 4 lakh rupees. RBI is very much concerned about the urban cooperative banks. Why? Because urban cooperative banks are doing too much things. So on frequently basis, I think after 2 or 3 days, if you go through the newspaper, you let to know that we generally read within the newspaper that 5 banks are RBI has charged, or urban cooperative banks 5 banks are charged penalty. Okay, on 5 banks RBI has charged penalty, and that's kind of a news that we are having. तो आए दिन आरबीआई जो है कोई ना कोई पेनल्टी ठोकता रहता किस पर, ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर. Okay, now National Electronic Toll Collection System, that is NETC. This is a system through which we basically collect electronic toll. NPCI has launched this particular system. The QR and FASTag. The QR and FASTag, by using QR code and FASTag, we can do the payment. And for this, NPCI has collaborated with Indian Highway Management Company Limited. And by using the QR code, now on the toll plazas we can do the payment. हमारे पास FASTag तो है, we are having the FASTag. With the help of the FASTag we do the payment. But now with the help of the QR code on the toll plazas we can also do the payment. ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं. Even if we are having the new vehicle, अगर हम नए vehicle owner हैं and our we haven't got the proper vehicle number, so even through the chassis number of the new vehicle we can get the FASTag and we can do the payment. So the UPI QR code, now NPCI has introduced a UPI QR code that will be used on non-adhesive end of the tag, so that the customer can recharge simply by scanning the QR code on the tag using UPI application while sitting inside their comfort in the vehicle. तो आप अपनी गाड़ी में बैठे बैठे अगर आपको फास्टैग आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, यू आर ऑन द टोल प्लाजा, तो आपको टोल प्लाजा के बाहर ही जो है वहीं टोल प्लाजा पर आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा, UPI QR कोड. And that UPI QR code our NPCI has connected with National Electronic Toll Collection System, through which this e-toll system basically function. So now if we don't have recharge, so we can directly scan and do the payment. Automatically recharge will be there. So it will reduce the time. Okay, ये टाइम रिड्यूस करेगा, अदरवाइज फिर बाकी जो प्रोसेस हम करते हैं वो थोड़ा सा लेंथी होता है. Apart from that, NPCI's National Electronic Toll Collection System, that is NETC FASTag platform, will also utilize for EV charging stations. We know, friends, the future is EV. In future we'll have lot of electric vehicles, and we basically want to transform most of our vehicle system, especially in 4-wheeler segment, towards EV. EV हमारी need है. EV is basically demand है समय की, और EV के development में there is one of the most important part is that charging stations. Charging stations are the big challenge. So in future, charging stations पर payment करना, okay, for the payment at the charging stations will be also a kind of a challenging thing. So NPCI is preparing for that, and NPCI has said that we'll basically combine our National Electronic Toll Collection System with the EV charging stations, and by using NETC QR code, the people can basically do the payment and can recharge their vehicles. Okay. So in a monotonous move towards the sustainable mobility, an eco-friendly solution, India Highway Management Corporation Limited and NPCI has collaborated to introduce electric vehicle charging payments on the NETC tag platform. And through this, in the future, we can also do the payment just like we do hassle-free payments on the electronic toll plazas. So this is a kind of a revolutionary product that NPCI is basically working for that. ठीक है, तो ये भी हमें एक revolutionary product देखने को मिलेगा. Dual authentication based सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अब डुअल ऑथेंटिकेशन बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम भी आएगा, जिसमें बायोमेट्रिक के थ्रू बार बार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमने देखा है. ओके, नाउ इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड विद इन दिस वन. डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन. जस्ट अ सेकंड.
We know, friends, we are having IMPS facility for the payments, just like NEFT, RTGS, IMPS, UPI. These are the multiple payment methods that we are having through which we can do the payment. Okay. IMPS is one of that crucial payment system that we are having. If we talk about NEFT, what is the, if I'll say a little bit drawback that we are having within NEFT? NEFT, we can transfer the funds. There is no minimum limit, no maximum limit. But the problem is that with the help of the NEFT, we can't transfer in the real time basis. If you transfer funds from NEFT, so it will take a little bit time. There is a settlement cycle, batch processing systems are there. Total 48 cycles we are having within the day. So 30 minutes settlement cycle, it will take some time. If you go through the RTGS system, so what is the drawback with the RTGS system? There is a minimum limit of 2 lakh rupees. So minimum 2 lakh rupees we will have to transfer. And in these two systems, we'll have to add beneficiary details. That means beneficiary name, banking account details, okay, name, nickname, and other things. We'll have to add beneficiary, and after that, we can do the payment. So what is best solution that we used to have? That is IMPS facility, immediate payment services. With the help of the IMPS facility, we can do the real-time payment system. We can transfer funds in real-time basis. Any to any bank, we can do the fund transfer. Any to any bank, fund transfer. What is the minimum maximum limit for this one? Minimum limit 1 rupee. The maximum limit is up to 5 lakh rupees. So up to 5 lakh rupees we can transfer with the help of IMPS. Now, before this particular news, till now, if I want to transfer funds using IMPS facility, so I'll have to add beneficiary. And how I used to add beneficiary? With the help of name, beneficiary name, account number, IFSC code. We used to add all these details, and after some time beneficiary will be added within our IMPS platform, and after that I can do the payment. Now NPCI has introduced a new thing within this one. Now without adding the beneficiary account number, now we can do the fund transfer, just like we used to do with the help of UPI. In UPI, just directly enter the mobile number of the customer, mobile number of the beneficiary, and we can do the payment. In the similar way, from now, by using IMPS methodology, there is no need to add beneficiary. We can, by using the mobile number of the beneficiary on the real-time basis, we can connect, we can add that particular person name, and immediately we can do the payment. And that is one of the best thing that will also popularize our IMPS system. So NPCI announced that the simplification of the IMPS user journey banking channels like mobile banking, internet banking platform. User will now be able to transfer entering just beneficiary mobile number, and that is one of the best thing that we are having, and the bank name just immediately, if you enter the mobile number, automatically the bank name will get. Okay, so this payment experience will accompanied by the real-time beneficiary validation. So there is no need to wait for the validation. Immediately we can do the payment. So this one is a new kind of update that we are having within IMPS facility. तो IMPS में ही हमें नया देखने को मिल रहा है. Okay, so this is a kind of a new thing that we are having. Let's move on the next one. So IMPS is now a simplified payment. Up to 5 lakh rupees, we can do the hassle-free payment without adding the beneficiary name. So without adding the beneficiary name, just by entering the mobile number, we can do the payment. Okay, so it's now easy and convenient for us. Now, one more thing that NPCI has introduced, because this particular IMPS facility is provided by NPCI. So National Payments Corporation of India is fully responsible for this particular payment system. Now, for our credit card bill payments, till now we used to do our credit card bill payments with the help of bank accounts and with the help of credit and different applications, different platform. Now, NPCI is introducing a kind of a IMPS system. By using IMPS virtual number, we can do the payment of our credit card bills. Okay, so credit card bill payment now we can do by using IMPS facility. Okay, now let's talk about this one. This one is a 16-digit virtual number. Credit card bill payment through the IMPS using virtual number. Now,
what is that this particular virtual number? It will be combination of 16 digit in which our customer mobile number as well as last digit of credit card, last 4 digit of credit card plus our bank mobile number. By adding these two combinations, we'll get 16 digit virtual number, 16 digit number, and with the help of this particular 16 digit number, we can do our credit card bill payments by using IMPS facility. So ये भी एक नया initiative that has been introduced to the IMPS, NPCI. So to ensure secure and instant credit card bill payments, NPCI has introduced credit card bill payments using IMPS virtual number. The customer will have to use only 16 digit virtual number, and which is combination of customer mobile number and last 4 digit of the card to pay the bill. So ये हमारे लिए one more convenient method has been introduced through NPCI. Okay. So NPCI हमारे यहाँ पर retail payments को promote करने के लिए NPCI is doing remarkable thing. खतरनाक काम करा भाई NPCI. ठीक है. Okay, आगे बात करते हैं. Now this one is also very important news. Before entering into this particular news, we'll have to go through a little bit background. We know, friends, if we talk about the urban cooperative banks, okay, just a second. Okay, friends, if we talk about the urban cooperative banks, the condition of urban cooperative banks is not too good within our country. The district cooperative banks, rural cooperative banks, primary cooperative banks, they are doing good. Is monitored directly by NABARD. But the problems are going with the urban cooperative banks. You know, we have heard about the condition of the Punjab and Maharashtra cooperative bank, that PMC Punjab and Maharashtra cooperative bank fraud that we have observed, I think 2 to 3 years back in Mumbai. So वो जो इंसिडेंट था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का, उसके बाद आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की मॉनिटरिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया. एंड आफ्टर दैट आरबीआई हैज कैटेगराइज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उसको हम स्केल बेस्ड रेगुलेशन कहते हैं. वी कॉल दैट अ स्केल बेस्ड रेगुलेशन. सो आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस अ स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. नाउ व्हाट इज द स्केल बेस्ड रेगुलेशन? We have created 4 layers of urban cooperative banks. Base layer urban cooperative banks, base layer urban cooperative bank, middle layer urban cooperative bank, upper layer urban cooperative bank, top layer urban cooperative banks. So we have created 4 layer of basically urban cooperative banks, 4 different layer of urban cooperative banks. And by defining urban cooperative banks with the help of these 4 layers, what we can do, we can increase our supervision, so that we can exactly know which kind of urban cooperative banks need more and more supervision. Because if urban cooperative banks will collapse, so they will create a spillover kind of effect, and that will also impact our entire financial system. So that's why we should need a strong supervision over the urban cooperative banks, and that's why RBI has introduced scale-based regulation for urban cooperative banks. So how many layers, friends, we are having? 4 layers for urban cooperative banks. Base layer, middle layer, upper layer, and top layer for urban cooperative banks. Now, how these urban cooperative banks are defined? Okay, so we are having these 4 layers. Let me explain. Okay, I'll explain each and everything. Just observe it. Base layer, middle layer, upper layer, and top layer urban cooperative banks. How we define the base layer urban cooperative banks? How we'll basically define? Depending on the asset size. Okay. Depending on the asset size, if we'll say, here we can observe, here we can start. Those urban cooperative banks which are basically which are having deposits, यहाँ देख लेते हैं सीधे. Those urban cooperative banks which are having deposits up to 1,000 crore rupees, that means 1,000 crore rupees and below that, they will fall under the category of, sorry, मैं urban cooperative banks कह रहा हूँ, ये बेसिकली एनबीएफसी का है. सॉरी, हम एनबीएफसी की क्लासिफिकेशन की बात करें, नॉट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है. ओके, सो दिस वन इज अ क्लासिफिकेशन फॉर द एनबीएफसीज, है ना.
बट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए टीयर सिस्टम है, टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, टीयर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक. Again, I am correcting myself. Okay, here we are talking about NBFCs. Okay, NBFCs was also in trouble. So for NBFCs, they have introduced this scale-based regulation. For urban cooperative banks, we are having 4-tier system, 4-tier structure model of the urban cooperative banks. Okay, so because I have initiated that word, so let me explain. Okay, sorry for that. I haven't got. I just read that NBFC. That was not NBFC, urban cooperative bank. Okay. So for urban cooperative banks, we are having 4-tier structure model. Tier 1. This one is also for a strong supervision of urban cooperative banks. Tier 2, Tier 3. And Tier 4. 4-4 system for NBFC for urban cooperative banks. That's why there is a confusion. Again, sorry for that. I'm taking my word back. Tier 1 urban cooperative banks. How we consider Tier 1 urban cooperative banks? Tier 2 urban cooperative banks. This classification is for increasing strong supervision for the urban cooperative banks, because urban cooperative banks, UCBs, were also in big trouble. This classification is basically based on the deposits. Those urban cooperative banks which were having deposits, which were accepting deposit, that is CASA RAFA, up to 100 crore rupees. If you are a urban cooperative banks and accepting deposit up to 100 crore rupees, so this particular urban cooperative bank will fall under the Tier 1 urban cooperative bank category. Those urban cooperative banks which are accepting deposit from 100 crore rupees, to 1000 crore rupees. So those urban cooperative banks which are having deposit, they are accepting deposit between 100 to 1000 crore rupees, they will fall under the category of Tier 2 urban cooperative banks. From 1000 crore rupees to 10,000 crore rupees. Those urban cooperative banks which were accepting deposit from 1000 to 10,000 crore rupees, they will fall under the category of Tier 3 urban cooperative banks. And for those urban cooperative banks which were accepting deposit above 10,000 crore rupees, so these urban cooperative banks will fall under the Tier 4 urban cooperative banks category. So this one is a classification for urban cooperative banks. In the similar way, we were having to increase the supervision for the NBFCs, because friends, we are having 12,000 plus NBFCs within our country, and 3 to 4 year backs we were having NBFC crisis. If I'm not wrong, 2016, 15-16 time span, the IBLF, India Bull Housing Finance kind of a crisis, and a lot of housing finance companies were basically within the big trouble. So NBFC's crisis was there. So in order to increase the supervision within the NBFCs, RBI has introduced a scale-based regulation. Now, in the scale-based regulation, friends, what we are having? In the scale-based regulation, we are having tier system. We were having that base layer, middle layer, upper layer, and this particular kind of a system. So those NBFCs which are non-deposit type, for non-deposit type NBFC, their assets are 1000 crore rupees and less than that. Those NBFCs which were having asset size 1000 crore rupees and less than that will fall under the category of base layer. Those NBFCs, whether it is deposit type NBFC, deposit, or non-deposit type NBFC, and having asset above 1000 crore rupees, asset size of above 1000 crore rupees, will fall under the category of middle layer NBFCs. Okay. Now, the Reserve Bank of India will decide those NBFCs which will be added within the upper layer. Earlier, RBI said that will add 10 NBFCs within the upper layer NBFCs, and these NBFCs are the one of the top most NBFCs, top 10 NBFCs, I can say directly. But recently, Reserve Bank of India has said that now will add 15 NBFCs within the upper layer. So what is the news? What is the update? Apart from the 10 NBFCs, RBI has added 15 NBFCs within this particular upper layer.
And for these NBFCs, we need more and more strong supervision. So RB will basically choose, RB will upgrade NBFCs from middle layer to upper layer, depending on their asset size, depending on their situation, depending on the top NBFCs. So right now 15 NBFCs are here. It might be possible in future we can increase the number, or in future we can have a better number or higher number. But right now this one. And if someone of these NBFCs, which we feel that are in trouble and create a spillover kind of effect, or can create a domino effect on our system, so we'll upgrade from upper layer NBFC to top layer NBFC. But right now this one is, there is no NBFC. Right now upper layer is blank. There is no upper layer NBFC in our system. I think you people are getting these points. Okay, I'm just going through the theory part so we can have better clarity. Okay, now let's observe here. RBI released the name of 15 NBFC that fall under the upper layer NBFC of scale-based regulation. Okay, scale-based regulation ये हमें देखने को मिला. Now this one is the name of these NBFCs. Okay, just like LIC Housing Finance, Bajaj Finance, Shriram Finance, Tata Sons, Larsen Tubro, Piramal, Cholamandalam, India Bulls, Mahindra & Mahindra, Tata Capital, PNB Housing, SDB Financial, Aditya Birla, Muthoot Finance, Bajaj Housing. So these are the top 15 NBFC that are basically part of upper layer NBFC. But top layer NBFC is blank. Okay, now let's again go through the theory. Now start from this one. What is base layer NBFC? Base layer NBFC primarily consists of non-deposit type NBFC with the asset below 1000 crore rupees. What is middle layer NBFC? Middle layer NBFC in this one deposit type as well as non-deposit type with the asset size above 1000 crore rupees. For NBFCs will promote from here. So the upper layer introduce NBFC identified by the RBI as well as warranting enhanced regulatory. We need more and more regulation for this one. Requirement based on the specific parameter scoring methodology. The top 10, earlier the definition was top 10, but now this one is top 15 NBFC will take within this one. NBFC in terms of the asset size always reside the upper layer regardless of their factor. Okay, so if from the asset size you are top 15 NBFC, so you will be the part of upper layer. For top layer, right now top layer is empty, but will promote upper layer from upper layer NBFCs. Those are very very important and can create domino effect. If they will fall, तो हम तो डूबेंगे सनम, बाकी को भी ले डूबेंगे. तो ऐसी अगर NBFCs हमें आइडेंटिफाई होती हैं, ऐसी अगर कुछ हमें बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, so we'll bring those NBFCs within this one. So NBFCs in the upper layer can be moved to the top layer as RBI recognizes substantial increase in potential systematic risk. Systematic risk, वही मैंने आपको बताया कि एक की वजह से बाकी भी ट्रबल्स में आ जाएं. As of now, the top layer remains idly empty, but it serves as a contingency for increased risk. So it is a kind of an emergency thing. So if we feel that the risk is higher, so we'll put NBFC within this segment. So this one is scale-based regulation. Again, I'm feeling sorry for that because मैं NBFC को UCB में समझ के explain कर दिया था आपको. चलिए कोई issue नहीं, I think. Again, I take my words back. Okay. So please let me know this one is clear. NBFC related point. So now in the middle layer, now in the upper layer, how many NBFCs, friends, we are having? We are having total 15 NBFCs. And the top layer is empty. Top layer is blank. Okay, let's move on the next one. Now NIPL is a 100% subsidiary of NPCI, National Payments Corporation of India Limited. And what is NIPL? NPCI, International Payments Limited. This particular 100% subsidiary of NPCI is fully responsible for promoting UPI-like products or NPCI products at the international platform. So a lot of tie-ups are basically going on at the international platform, and this is one of them.
So recently, NPCI International Payments Limited executed an agreement enable India's consumer for e-commerce purchase with UPI in USA and in UK. So in USA and UK, those Indian consumers, with the help of the e-commerce website, they can order, they can do the payments. Okay. So a lot of developments are basically going on within this one. NBBL, NPCI Bharat Bill Payment Limited. This one is also a 100% subsidiary of of NPCI, and this particular is functioning on creating a seamless bill payment services. So on your mobile number, with using the UPI application, you can fetch any particular bill and you can do the bill payments. So different kind of a bill payments we can do with very easy with the help of our mobile phone. Okay, so that is very easy for us. Okay, now this one is also very interesting thing. UPI one word. Okay, these things are basically related to the UPI one word. Okay, let's talk about directly. You know, we have with this year we hosted a G20 for the first time. G20 group of 20 nations summit. Okay, that was very much highlighted, and that was very prestigious time for us. And during that particular UPI event, a lot of foreigners, or that means a lot of people who are basically living outside, they came to India. A lot of foreigners are there. Now we want to basically give them taste of UPI. हम उनको UPI का थोड़ा सा taste देना चाहते थे. Okay, we want to give basically a taste of UPI, that what a different kind of a product that we people are having that you guys are not having. Okay, so that we want to basically एक तरीके से उनको थोड़ा सा taste कराना चाहते थे UPI का feature. So, but they are using for them they are using the foreign currencies. So Foreign Currency Management Act and different regulations are there, so they can't directly use here. So what NPCI did, NPCI has tie up with the prepaid payment instruments, and they have created a limited for a particular time span for these foreigners, or for these people who basically came from foreign as a guest for us. We have created a UPI one word application, UPI one word feature for them. And we have preloaded money within that. Automatically their currency will exchange. They can add a little bit amount of money within that. And by using that particular UPI application with their phone, they can do the payments. And आराम से वो लोग पेमेंट कर करके एंजॉय कर रहे थे. आपने देखा होगा वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुई थी. कोई हरी मिर्च खरीद रहा, कोई कुछ खरीद रहा, कोई वहाँ पर UPI बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे. इन द भारत मंडपम there were lot of stalls, and they used to do payments with the help of the UPI on those stalls. So they were enjoying that. So for those people, we basically introduce a UPI one word. Okay, so UPI one word ऐसा कुछ different नहीं है. It's only for inbound travelers who are basically foreigners. They basically enter within India. Money वगैरह आप लोड करिए, और इसमें RBI का जो foreign exchange management guidelines वगैरह, उसके सबकी guidelines follow हो रही थी, तो they can easily convert their currency also. So everything was permitted. So money exchange was very easy within this one. So to introduce a different kind of a UPI one word to basically, so that easily they can exchange their money. Okay. And there was very easy KYC processes were also there. Okay, and whatever the money that you have loaded, and if some money left in the end of, let's suppose आज मैं वापस जा रहा हूँ, मेरा कुछ पैसा अगर UPI wallet में बच गया इस UPI one word wallet में, so that will refund. Okay, so the unutilized balances of the UPI one word can be encashed to the foreign currency, transferred back to the source and payment source where the prepaid payment instruments were loaded. और यहाँ पर आराम से foreign exchange management के जो हमारे rules regulations हैं, there was no violation for that. And that kind of a thing that we are having. And ये इस समय हमने branding बहुत अच्छी कर दी अपने UPI products की. And earlier we were also doing that thing. So बढ़िया से हमने UPI को promote किया रखा है. ठीक है. So चलिए, तो ये these are the different kind of products that are basically used through the NPCI. These all products we have already discussed within the session. So within our paid session we have already discussed all those things. Okay, I'm taking the name of these products one by one. Okay, now one more thing, UPI has also increased the UPI Lite limit. Okay, without entering PIN, we can do the payment for slow internet connections, for slow connectivity, UPI Lite. Earlier, the limit was 200 rupees. RBI has increased from 200 rupees to 500 rupees. Now, different products of the NPCI that we can go through. UPI, Unified Payment Interface, Rupee Platform, Bharat Interface for Money, National Automated Clearance House. What is NACH system? NACH system is used for the bulk payment transfer, just like subsidy transfer, dividend transfers, any kind of salary transfers, bulk payment transfers or repeated or scheduled payments transfer, we can do with the help of NACH system. Is also introduced by NPCI.
IMPS immediate payment services, National Electronic Toll Collection FASTag system. Star 99 has is basically National Unified USSD Platform, NUUP system. What is NUUP system? National Unified USSD Platform. What is USD? Unstructured Supplementary Service Data. You just dial star 99 hash on your mobile phone that is registered with your bank account, and you can do basic fund transfer, just like balance inquiry, mini statements, a little bit amount of fund transfer. We can do this with the help of this one. Check truncation system for faster payment of the check. National Financial Switch. ATMs networks are basically connected through this one. Aadhaar enabled payment system. Bhim Aadhaar. E-rupee, that is electronic rupee. This one is prepaid vouchers. This one is prepaid voucher. This is not digital rupee, prepaid voucher. Prepaid voucher. Okay. Auto pay, IPO, UPI 123 pay we have just discussed. UPI Lite, UPI one word भी हमने बात किया. Hello UPI. The UPI onboarding on UPI, UPI number, certification and other things. These all lists are basically available on the NPCI platform. Okay, NPCI के platform पर ये सारी list available थी that we have discussed. Okay guys, please let me know all these points are clear to everyone. तो ये सारे पॉइंट्स उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो इसकी जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगी, है ना. दैट PDF आई विल प्रोवाइड विद इन द डिस्क्रिप्शन, है ना. आपको कमेंट सेक्शन में वहाँ पर आराम से मिल जाएगी. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. मैं आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर 8 सेशंस के बारे में, सो दैट आप अगर फर्दर इफ़ यू पीपल गाइस वांट टू बेसिकली कनेक्ट विद अस तो आप कनेक्ट हो सकते हैं. फॉर एनी पर्टिकुलर प्रमोशनल एग्जाम देयर इज प्रमोशन, देयर इज महापैक दैट वी आर हैविंग फॉर द प्रमोशन. यहाँ हम प्रमोशन एग्जामिनेशन पर जा सकते हैं और वी आर हैविंग अ प्रमोशन महापैक. एनी पर्टिकुलर बैंक, है ना, आपका किसी भी पर्टिकुलर बैंक का एग्जामिनेशन है, सो आप स्केल किसी भी स्केल से आप प्रमोशन ले रहे हैं, सो ऑल दोज प्रमोशनल एग्जामिनेशंस बैचेस आर बेसिकली कवर्ड विद इन दिस वन. सो वी कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बैच. और इसमें 3,336 वीडियोस प्लस 16 ई बुक्स, 5 टेस्ट सीरीज और जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं प्रमोशनल एग्जाम्स के, ऑल विल कवर विद इन दिस वन. इसमें रेगुलर टेस्ट है, मॉक टेस्ट का फीचर आपको देखने को मिलेगा, और जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज है वो सभी आपको देखने को मिलेगा. रेगुलर टेस्ट है. इफ़ यू आर विद इन द बैंक, सो आप सेशंस को बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, बाद में भी सेशन देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, PDFs वगैरह, ऑल दीज फीचर्स आर अवेलेबल विद इन दिस वन. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाई लिंक पर क्लिक करेंगे और आई थिंक आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी फर्दर मिल जाएगा. Y856 इफ़ वी यूज़ द कोड. लेट मी चेक. ओके, सो यहाँ पर अगर लेट मी चेक 4599 Y856. ठीक है, तो आपको यहाँ पर फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप कूपन यहाँ पर अप्लाई करें. सो 4599 का मिल जाएगा. सो मैं कूपन कोड आपको बता देता हूँ. तो थ्रू दिस वन यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. Y856. ठीक है, तो इसके थ्रू आप मैक्सिमम जो है बेनिफिट्स जरूर ले सकते हैं. इसके अलावा और भी फर्दर जो है डिटेल्स हैं, है ना. आपको कोई भी डिटेल है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर सकते हैं. और अड्डा 247 के स्टोर से यू कैन गो थ्रू दिस वन, है ना. ऑलरेडी बहुत सारे जो है प्रमोशनल बैचेस चल रहे हैं, है ना, जिसमें SBI TU वगैरह के एग्जामिनेशंस हैं, अदर एग्जामिनेशंस हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल है. ठीक है, तो PDF आप बिल्कुल ले सकते हैं और कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, Y856, है ना. सो थैंक्स फॉर बीइंग इन द सेशन. अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा. एंड दिस काइंड ऑफ अ मैराथन सेशन आई विल ब्रिंग मोर मैराथन सेशंस फॉर यू ऑल्सो. ओके, तो इस तरीके का और मैराथन सेशन हम आगे देखेंगे. ठीक है, सो thanks for being in the session. Okay, see you in the next session. Till then, bye bye, take care, thank you very much. Do also like the session and आपके comments का भी welcome रहेगा. Okay, thank you very much.